Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So today we will start inverse Laplace transformation. Midterm examination में unit 1 और unit 2 cover होगी, numerical methods part 1 and numerical methods part 2. Okay. Laplace transformation, any problem with the Laplace transformation किसी को? No, ma'am. Fine. So let's start with the inverse Laplace transformation. It's parallel to the Laplace transformation. So suppose we have a function f of t, and f of s is the Laplace transformation of that function. So I'm saying if f of s is the Laplace transformation of a function f of t, it means कैसे represent करते हैं इसको? Laplace transformation of f of t will be f of s. ये है. तो जो inverse Laplace transformation होगा, then we can say that inverse Laplace transformation of f of s f of t is the inverse Laplace transformation of f of s. So we can written as f of t will be equals to L inverse of f of s. F of s. ठीक है? So this Yes, is ma'am. equation from Laplace transformation. If Lf of t is f of s, means f of s is the Laplace transformation of f of t. Then f of t is the inverse Laplace transformation of f of s. It's simple. So I'm going to take the inverse Laplace transformation of some special functions. जो हमने Laplace transformation में भी evaluate किए थे. Means if Laplace transformation of 1 is 1 by s, then inverse Laplace transformation of 1 by s is 1. Inverse Laplace transformation of some special functions. इसमें first आता है हमारे पास. We know that the Laplace transformation of 1 is 1 by s. S is greater than 0. It means the inverse Laplace transformation of 1 by s will be equals to 1. Is this okay? Yes, ma'am. Next is सारे वही फॉर्मूलेज हैं जो हमने Laplace transformation में प्रूव भी किए थे. So if Laplace transformation of t raised to the power n, क्या होता है इसका Laplace transformation? फैक्टोरियल n प्लस अपॉन s पावर n प्लस फैक्टोरियल होगा जब पॉजिटिव नंबर वाली कंडीशन होगी. ठीक है, अदरवाइज नेगेटिव. सो इसका जो अगर मैं इनवर्स लिखूं, inverse Laplace transformation of 1 raised to the power 1 upon s raised to the power n plus 1, it's equals to t raised to the power n upon gamma n plus greater than minus 1. And we have also condition here, if n is a positive integer,
तो ये जो n+1 फैक्टोरियल है, इस गामा n+1 है, its value is equals to n n factorial. factorial. Then gamma n+1 is equals to n factorial. Now we have third formula for the exponential term. Laplace transformation of e raised to the power a is equals to 1 upon s minus a, and s is greater than a. Laplace transformation of 1 upon s minus a कितना होगा? Inverse Laplace transformation of 1 upon s minus a is e raised to the power power 80. 80, and its s is greater than a. In the same way, we know that the Laplace transformation of sine function, sin 80 का जो Laplace transformation होता है, it's a upon s square plus a Square square. plus a square. S is greater than 0, then inverse Laplace transformation of 1 upon s square plus a square is equals to 1 by a sin 80. There. Now the Laplace transformation of cosine function is equals to s upon s square plus a square. S square plus E square. Yes, and s is greater than 0. So the inverse Laplace transformation of s upon s square plus a square is equals to cos 80. In the same way, the Laplace transformation of hyperbolic sine function and hyperbolic cosine functions. These all are the standard form special functions in case for the Laplace transformation and inverse Laplace transformation. Sixth one is the Laplace transformation of साइन फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में सिर्फ डिफरेंस चेंज है. यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और हाइपरबोलिक में यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है. a upon s square minus a square, and s is greater than equal to mod value of a. This implies inverse Laplace transformation of 1 upon s square minus a square is equals to 1 by a sin hyperbolic 80 . Last Laplace transformation of cos hyperbolic 80 is equals to क्या होता है ये? s upon S upon S square minus A square. So the inverse Laplace transformation of s upon s square minus a square will be equals to cos hyperbolic 80. So do remember these all formulas for finding the functions values from inverse Laplace transformations. Now we have same properties as we have studied in the Laplace transformation. So first property हमने पढ़ी थी वहाँ पे first translation और the shifting property. उसी में बिल्कुल same property उसी के parallel यहाँ पर है. यहाँ पर हम उसको inverse में change कर देंगे. Second property is the shifting property and third one is the change of the scale property. तो सबसे पहले मैं कुछ simple functions का inverse Laplace transformation evaluate कर रही हूँ. Then we will come to the properties of the inverse Laplace transformation.
Now the question is, find the inverse Laplace transformation of these functions. First problem is, फंक्शन जो यहाँ पर दे रखा है ये मेरे को इवैल्यूएट करना है. 4 upon s minus 3 minus 2s upon s square plus 9 plus 5 upon s square plus 60. Is this okay? तो Yes, ma'am. इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इवैल्यूएट करना है. यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में विच इज नॉन एज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी. इधर लिख लेते हैं. लीनियरिटी प्रॉपर्टी मेरे को पहले बतानी थी तो वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. लीनियरिटी प्रॉपर्टी मीन्स कि मेरे पास दो फंक्शंस गिवन है. सपोज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन c1 f1 of s plus c2 f2 of s. f1s है f2s दो फंक्शन है, c1 c2 कांस्टेंट है. तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से we rewrite as c1 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन of f1 of s plus c2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन of f2 of s. तो सेम हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. लीनियरिटी प्रॉपर्टी मैं अप्लाई यहाँ पर कर रही हूँ. सो वी rewrite as being a constant 4 is taken outside from the Laplace transformation 1 upon s minus 3 minus twice Laplace transformation of s upon s square plus 9 plus 5 inverse Laplace transformation of 1 upon s square plus 16 and do write which property you have used. So this is from by linearity property of the Laplace transformation. Is this clear? Yes, ma'am. Now simply apply the formula जो अभी मैंने special functions बताए थे. So this is the formula for the exponential term. Inverse Laplace transformation of 1 upon s minus a is e raised to the power 80 80. equals to e raised to the power 3t. 3D. minus twice Laplace transformation inverse Laplace transformation of s upon s square. Cos. This is the cosine function Yes, ma'am. Cos 3t. cos 3t, and in the same way this is the inverse Laplace transformation of sine function and its value is equals to 1 upon a sin 80. यही था ना, inverse Laplace transformation of s square plus a square is equals to 1 upon a sin 80 and a is 4 here. So its value is 5 by 4. Sin 4. You can write it by standard. Sin 40. And sin 4. This is sin 40. Standard results. ठीक है? Is this okay? Yes, ma'am. Simple problem जहाँ पर हमने लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली यूज करके सॉल्व कर लिया गया. नाउ नेक्स्ट सी द प्रॉब्लम. सपोज find the inverse Laplace transformation of 1 upon s square plus 8s plus 16. 1 upon s square plus 8s plus 16. So how can we solve it? S plus 4 का whole square. Or the whole square. Square
प्लस 4 हो. लीव दिस क्वेश्चन, इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज होगा. वी विल डू इट लेटर. फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. Look at the problem. Find the Laplace transformation of 1 upon s sine 1 upon s. 1 upon s sine 1 upon s. So we know that the expansion of sine function का expansion हमें पता है क्या होता है. sin x क्या होता है? x minus x cube by 3 factorial. यही होता है ना? Yes, ma'am. X 5 upon 5 factorial. And it using sin 1 upon s कितना होगा? 1 by s minus 1 upon 3 factorial 1 upon s cube plus 1 by 5 factorial 1 upon s 5 minus 1 upon 7 factorial 1 by s 7. Is this okay? Now 1 upon s sin 1 upon s की कितनी वैल्यू जाएगी? It's 1 upon s square 1 upon s raised to the power 4 1 upon s raised to the power 6 1 upon s raised to the power 8 and so on. Any problem? Oh, ma'am. Now taking the Laplace transformation and apply this standard results. One by s square 1 by 3 factorial 1 by s4 1 by 5 factorial 1 by s6 and 1 by sh. This is from the linearity property. Is this okay? Yes, ma'am. Clear to all? Clear or not? Clear, ma'am. Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. inverse Laplace transformation 1 upon s square का कितना होता है? बताओ. T upon gamma 2. गामा में नहीं लगेगा, पॉजिटिव है ये. Not in fraction. You can write it in form of factorial. ऐसा था ना, L इनवर्स 1 अपॉन s का कितना था हमारे पास? 1 था. L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज़ टू द पावर n प्लस 1 का कितना था? N factorial. N. T की power n gamma n plus 1. अभी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्मूला से 1 अपॉन s रेज़ टू द पावर n मैम T की power n upon gamma n plus 1. की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, गामा की जरूरत नहीं है. सो डू अप्लाई द फॉर्मूलाज हियर. इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे t अपॉन T upon 1 factorial. माइनस t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल Factorial. raised to the power 5 upon 5 factorial Factorial. t raised to the power 7 upon 7 factorial and इवैल्यूएट कर लो थोड़ा सा. ये हो गया is
is equals to t minus t cube upon 3 factorial का whole square, t raised to the power 5 upon 5 factorial, whole square, 7 factorial whole square, and so on. So this is the inverse Laplace transformation of 1 by s sine 1 by s. In the same way, you can evaluate the inverse Laplace transformation of cos 1 by s. So do it yourself. Cos का फॉर्मूला आपको पता है 1 minus x square by 2 factorial x cube. क्या होता है कोसाइन फंक्शन? Please do write your attendance. And mention your branch. जिन लोगों ने लिख दिया है उसको दोबारा मत लिखना वो लोग. अनुभव, विशाल, गोपाल, please don't write it again. Plus x raised to the power 4 by 4 factorial and so on. Clear? Yes, ma'am. Now next we will see the shifting property or the first translation theorem in inverse Laplace transform. First translation or shifting property. So it states that if L inverse f of s is equals to f of t, then L inverse of f of s minus a is equals to e raised to the power at. FT. So this is the first translation theorem. उसमें भी जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो इसके जस्ट अपोजिट थी कि इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते थे, then it will be f of x minus a. Clear? Yes, ma'am. So let's see the problem based on this theorem जो मैं अभी आपको पहले करा रही थी क्वेश्चन. Second translation में इसका भी कर सकते हैं. और इसको मैं ये लिख सकती हूँ e की पावर 80 f of t means L inverse of f of s. यही होगा ना, f of L inverse of f of s. So this is the shifting theorem. Now the question is find the inverse Laplace transformation of one upon s square plus 8s plus 60. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? This is the whole square of s plus 4. ये फंक्शन देखो इस फॉर्म का है. So with the help of shifting theorem, what will be the value? ये थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्या वैल्यू होगी इसकी? मैंने बोला L इनवर्स f of s माइनस a का होता है e की पावर 80 L इनवर्स ऑफ f of s.
यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? If you are going to compare -4. -4, so it will be e raised to the power -40 L inverse of 1 upon s square. So simple. और e raised to the power -40, इसको इनवर्स निकाल लो, इसका इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी? t upon 1 factorial. Solution is t raised to the power -40. So this is from the shifting theorem. यहाँ पर मेंशन कर दो कि आप कौन सी थ्योरम अप्लाई कर रहे हो. Clear? Yes, ma'am. Problem is find the inverse Laplace transformation of 6s minus 4 by s square minus 4s plus 20. So देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज 6s minus 4. जहाँ पर भी कुछ भी इस तरीके की टर्म दी हुई होती है और हम उसका होल स्क्वायर कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ट्राई टू कन्वर्ट राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ द होल स्क्वायर, क्योंकि वो लिखते ही हम उसमें शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इसको मैं होल स्क्वायर टर्म्स में लिख सकती हूँ. होल स्क्वायर 16. Take it like this. Curve it. Please mute your mic. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Or we can rewrite it like 6 of s minus 2 plus 8 s minus 2 whole square plus 16. इसको ऐसे लिख सकते हैं. Yes, ma'am. Now with the help of linearity property you can separate these terms. So it's equals to 6 of L inverse s minus 2 by s minus 2 whole square plus 16 plus 8 of L inverse of s minus 2 whole square plus 16. Now can you solve it? Solve this. To solve, यहाँ पे मैं अगर शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करूँ, दिस इज s minus a, so it will be e raised to the power 2t L inverse of s upon s square plus 16. You can apply the shifting property here, and this will be a t raised to the power 2t L inverse of 1 upon s square plus 16. Now this is the inverse Laplace transformation of sine function and the cosine function. Any problem? ये किसका हो गया? This is 6 e raised to the power 2t Power 2t cos cos 4t, and it will be 1 by 4. This is twice of e raised to the power 2t sin 4t.
solution. Clear? Clear to all of you or any problem? Clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, मैम यहाँ 8 आएगा ना 2 की जगह? कहाँ पर? नहीं, ये 1/, होगा ना, 1/4 होगा ना. साइन फंक्शन है ना, साइन फंक्शन में क्या होता है? हाँ. लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Laplace transformation of 1 upon s square plus a square is 1 upon a inverse Laplace transformation of sin 80. So it will be 1/4 sin 40. Cancel हो जाएगा. Clear? Yes, ma'am. Now next problem is inverse Laplace transformation of 1 upon s plus a cube. Can you solve it? कर सकते हो इसको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होगी यहाँ पे. So e raised to the power minus 80. raised to the power minus 80 inverse Laplace transformation of 1 upon s cube. Simple. 1 upon s. कोई problem? By the shifting theorem. One more problem, let's see. Inverse Laplace transformation of. Wait a minute. One upon s minus a raised to the power n. ये भी हो जाएगी. Do try to solve this problem. And see one more problem. Find the inverse Laplace transformation of 1 upon square root of 2s plus 3. 1 upon square root of 2s plus 3. तो सबसे पहले आप इस पे होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो और होल स्क्वायर बनाने के बाद अप्लाई द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. Okay? So do try to solve this problem. इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सेकंड ट्रांसलेशन और द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन केस इन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, मैं प्रॉपर्टी बता देती हूँ.
इसके बाद आपकी क्लास है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितने बजे से? सेकेंड ट्रांसलेशन Please. So it states that if L inverse f of s is equals to f of t, then L inverse of e raised to the power minus as f of s is equals to g of t, where g of t is defined as f of t minus a and 0 when t is greater than a and when t is less than a. If Laplace transform, inverse Laplace transformation of f of s is f of t, then inverse Laplace transformation of e raised to the power minus as f of s will be g of t, and g of t is defined in terms of this f of t minus a when t is greater than a, and it will be 0 when t is less than a. In the same way, we have change of scale property here. इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. Change of scale property. So, if inverse Laplace transformation of f of s is f of t, then inverse Laplace transformation of f of as is equals to 1 upon a f of t by a. So this is change of scale property, and we will solve the problem based on second translation and change of scale property in the next class. So any problem अभी तक जितना पढ़ा है, any इसको कोई दिक्कत, or it's clear? Yes, ma'am. All clear. Next class will be on Tuesday, right? ठीक है, तो ट्यूसडे में देखते हैं. और मैं एक असाइनमेंट ट्रांसफॉर्मेशन का आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है, वो करना है आज या कल में कर दूंगी. ओके.